Good morning, students. Classification of elements. We are going to discuss about physical properties of periodic table, physical trends of the periodic table. First physical trend is atomic size or atomic radius. Atomic radius means the center of nucleus to valence shell. Distance is known as atomic radius. This atomic radius measured different molecules, ionic radius, covalent radius, as well as मेटालिक रेडियस. मेटल एटम के बीच में जो रेडियस को कैलकुलेट करेंगे तो मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा तो कोवेलेंट रेडियस. This atomic radius will be increased when we move top to bottom due to increasing shells, and when we move left to right, atomic size will be decreased due to effective nuclear charge will be increased. And one of the example we are going to discuss based on the atomic radius. Here three elements are there. One is aluminum, carbon, and another one is silicon. Aluminum, carbon, and silicon. First, we are going to find which element having atomic size is least. Least atomic size, otherwise highest atomic size, height or lower. In this study, first the atomic numbers of aluminum 30, carbon 6, and silicon is 14. This aluminum is belongs to, carbon belongs to which group? 14 group element. Aluminum is belongs to boron 13 group element. Boron, carbon, here carbon is atom number 6. Aluminum, this is 13 and this one is 14. Aluminum after boron 13 group and silicon after carbon in 14 group. Here we are going to compare the atomic center with these elements. Now these are the single elements and this one is 13 group element. Here carbon is belongs to second period and aluminum is silicon belongs to third period. Here the atomic center carbon is various comparison with aluminum and silicon. Sorry, maximum because effective nuclear charge. So in this one, effective nuclear charge तो यहाँ पे भी फर्स्ट ग्रुप में तो फर्स्ट सेकंड ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट सबसेक्वेंट कार्बन का ही है. उसके बाद इन ग्रुप में क्या होता है कार्बन से कंपेयर करेंगे तो सिलिकॉन का जाता है. बट इन दोनों में से सिलिकॉन को कम होगा. व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट मूव होगा तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज किसका कम होगा? Aluminum having 13 electron, 13 proton. Silicon having 14 electron, 14 proton. That's it. The size of aluminum is greater than silicon. Aluminum is greater than silicon and increasing order for increasing order. तो यहाँ पे increasing order सबसे ज़्यादा किसका होगा? सिलिकॉन का होगा. उसके बाद एल्यूमिनियम का होगा. उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद कार्बन. Increasing order of atomic size, carbon is less than silicon is less than aluminum. Means maximum atomic size aluminum, then silicon, then carbon को लेगा. Atomic radius and atomic size को कैलकुलेट करना मतलब फर्स्ट उसका ग्रुप लिख लेगा, पीरियड लिख लेगा, इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे least atomic size will goes to the carbon and next is one silicon, next aluminum. Means highest atomic size aluminum, then silicon, then carbon. तो ये मेथड से आप ग्रुप में पीरियड में एटॉमिक साइज कंपैरिजन करके ऑर्डर को फाइंड आउट करना. तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्वेश्चन पूछेगा. तो आपको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं बाय द सिंबल. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आयनिक रेडियस. सेकंड टॉपिक
ionic radius. Ionic radius is similarly radius to same. The distance between center of nucleus to valence shell is known as radius. This radius in case we can find in ions, that is known as ionic radius. But ions, which molecule can form the ions? Ionic molecules. Ionic molecules. These ionic molecules forms one is positive ion and next one is negative ion. Here, the distance between positive ion and negative ions of nucleus is known as ionic radius. Means average distance between center of nucleus of positive ion and center of nucleus of negative ion is known as ionic radius. Next, how this positive ion will be formed and how this negative ion will be formed. When the atom will lose electron, positive ion will be formed. Electron loss over the positive ion, electron gain negative ion formed. Here, ionic radius can be measured by measuring the distance between positive ion and negative ion in ionic crystals. The positive ion is smaller than its parent atom because it has less electron. Okay. The positive ion is smaller than its parent atom because it has less electrons. The positive is less positive ion is smaller than its parent atom because of less electron. मतलब यहाँ पे effective nuclear charge ज़्यादा है, means number of electrons ज़्यादा रहेगा comparison with number of protons ज़्यादा रहेगा comparison with electrons because positive ion will be formed by the loss of electron. इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो पॉजिटिव होगा. कभी भी ऑब्जर्व करो केमिस्ट्री में एटम्स मॉलिक्यूल जो भी हो प्रोटॉन कभी लॉस नहीं होगा, ओनली इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन. दैट्स व्हाई केमिकल बॉन्ड विल बी occurred between two atoms only. ओके, तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है नहीं तो इलेक्ट्रॉन गेन होता है. प्रोटॉन लॉस प्रोटॉन गेन कभी नहीं होगा. ये कॉन्सेप्ट याद है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा. तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ऑटोमेटिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा. नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो effective nuclear charge of the atom will be increased. Then the size of the positive ion is smaller than its parent atom due to the less electrons. And next is the point of negative. Negative means it will gain one electron from other atom. So electron number comparison with proton क्या होगा, increase होगा. So effective nuclear charge means attraction between electron and proton. So effective nuclear charge will be decreased in negative ion. Then the size of the negative ion is greater than its parent atom. Parent atom से कंपेयर करेंगे तो एटॉमिक साइज नेगेटिव का ज्यादा रहेगा. पेरेंट एटम से कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव का एटॉमिक साइज कम. Example here, this means that effective nuclear charge is higher in positive ion than its parent atom. For example, 11 proton attract 11 electrons in sodium. Example, sodium, any sodium is its atomic number is 11. Then it will lose one electron. Any plus it is releases one electron. Sodium having 11 protons, 11 electrons. But Na plus having 10 protons and 11 protons, 10 electrons. 11 protons and 10 electrons. The effective nuclear charge of this positive ion is greater than its parent atom. यहाँ पे 11 protons है और यहाँ पे 10 electrons है after losing of one electron. ये 10 है 11 10 को मैक्सिमम अट्रैक्ट करेगा. यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ. द साइज ऑफ द Na प्लेस इज लेस देन इन बिकॉज यहाँ पे 11 को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे 11 10 को ही अट्रैक्ट कर रहा है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम. दैट्स व्हाई द साइज ऑफ Na प्लेस इज लेस देन इट्स ओरिजिनल एटम. एंड सिमिलरली नेगेटिव के लिए एक बार कैलकुलेट करो. एग्जांपल क्लोरीन. दिस क्लोरीन इज बिलोंग्स टू 17th group element. Here fluorine belongs to 17th group element and its atomic number 17, and 17th group elements are known as halogen,
elements. This fluorine will attract one electron from other elements. So ये fluorine one electron attracted to Cl minus negative ion को formation किया. Actual atomic number for this set fluorine is 17. Here 17 protons are there and 17 electrons are there. But in this Cl minus negative ion, 17 protons are there but 18 electrons. Here the effective nuclear charge will be decreased due to the increasing electrons. तो नेगेटिव में क्या हुआ? effective nuclear charge decrease हुआ comparison with its parent set. So negative ion effective nuclear charge will be less than its parent atom. That's why the atomic size of the chloride ion is greater than CH. CH parent atom से compare to negative atom का atomic size maximum रहेगा because effective nuclear charge will be decreased in negative ion effective nuclear charge is increased in positive ion effective nuclear charge increase over the nucleus will attract the electrons towards itself maximum, then the size of the atom will be shrink or decrease. ये information. Another example is given here. Uh, the ionic radius of Na plus is 95 picometers and Na is 186 picometers. 95 picometers. 186 picometers. 95 picometers. And here similarly fluorine and fluoride. मैंने यहाँ पे chlorine लिया तो fluorine fluoride the size of F minus is 136 picometer. F minus is 136 picometer. But F atomic size, atomic radius of F is only 64 picometers. Minus is greater than its original atom. Negative ion is greater than its parent atom. And we also find equal number of electrons in some atoms and ions. We can find equal number of electrons in some atoms and ions. They are known as isoelectronic species. This word is called isoelectronic species. Isoelectronic atoms species. Isoelectronic species. These isoelectronic species having same number of electrons. Same number of electrons. Isoelectronic species means the ion or atom having same number of electrons is known as isoelectronic species. क्योंकि यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि लास्ट फर्स्ट में एक वर्ड एक्सप्लेन किया atom can loss only electrons loss or gain electron loss होगा नहीं तो electron ही gain होगा तो loss gaining में क्या होता है two different atom it may be ion or atom तो ion एक loss होगा gain होगा तो उसका electrons similar होने के लिए chances होते हैं जो ions नहीं तो atom में atomic electron number similar होगा तो वो isoelectronic species होगा isoelectronic species में फिर इसका atomic size और ionic size different example here O minus 2 F minus Na plus Mg plus 2 O minus 2 F minus Mg plus 2 and another one is Na plus. These four are isoelectronic species. In this four, two are the negative ions and two are positive ions. But these two positive and negative ions having similar electron number. That's why these four ions are known as isoelectronic species. How? What is the number for these four ions? Here, virgin oxygen having 8 electrons, fluorine having 9 electrons, magnesium having 12 electrons, sodium having 11 electrons. Clear atomic number. But here O minus 2 that means minus over the 2 plus 10 electrons, minus 1 means plus 1, 10 electron, plus 2 means minus 2, then 10 electrons, minus 1, 10,
10 electrons means these four species having total number of electrons are 10. That's why these four species are known as isoelectronic species. सिंपल आपको एटॉमिक नंबर पता होगा तो नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है. नेक्स्ट, and their radii are different because they have different nuclear charges. Effective nuclear charge will be different. तो यहाँ पे effective nuclear charge maximum होगा, means positive में effective nuclear charge maximum रहेगा, negative में effective nuclear charge minimum रहेगा. तो कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव का एटॉमिक साइज कम होगा, नेगेटिव का एटॉमिक साइज ज्यादा रहेगा. सबसे कम एटॉमिक साइज Lg+2 करेगा, उसके बाद Na+ करेगा, उसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन नेक्स्ट ऑक्सीजन फ्लोरीन effective nuclear charge number of electrons को लिखे आप चेक करो. नेक्स्ट, effective nuclear charge is increased due to higher positive charge in positive ions, so its radius will be small. The effective nuclear charge is decreased due to higher negative charge in a negative ion, which results bigger radius. Now we will think about the size of magnesium Mg+2, Al+3. First one, Mg+2, Al+2. सिंपल, इसका एटॉमिक साइज ज्यादा रहेगा, एटॉमिक साइज न्यूट्रल का मैक्सिमम रहेगा कंपैरिजन विद पॉजिटिव एंड क्लियर. एंड विच एटम हैविंग, तो इसमें इन दोनों में कंपैरिजन में, इन दोनों में कंपैरिजन कंपेयर करेंगे तो 12 मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम. व्हेन वी मूव, मैग्नीशियम बिलोंग्स टू second group element, aluminum is belongs to third group, 13th group elements. When we move left to right, then atomic size will be decreased. यहाँ पे magnesium aluminum, तो यहाँ पे atomic size aluminum is less than magnesium. So left to right, so that aluminum is less than magnesium in isoelectronic species. When the positive charge increases, then the radius decreases. Hence, we have the isoelectronic species is on Al+3 and Mg+2. Isoelectronic means Al+3 also having 10 electrons. Here electrons are 10. Here also electrons are 10. These two are isoelectronic species. But number of protons in this aluminum is 13. Number of protons in this magnesium is 12. Here effective nuclear charge up because 13 proton more attract the 10 electrons comparison with 12 protons. So यहाँ पे effective nuclear charge ज़्यादा है. The size of Al+3 is less than Mg+3. Al+3 is less than Mg+3. ये effective nuclear charge कैलकुलेट करके atomic size को फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड. Clear? And next we are going to discuss ionization enthalpy. So similarly, ionic radius होने दो, atomic radius होने दो. The trend is in group and period is similar. Ionic radius also will be increased when we move group top to bottom, and when we move left to right, ionic radius as well as atomic radius will be decreased. Atomic radius होने दो, ionic radius होने दो, group में up to down increase होगा, period में left to right decrease होगा. Clear? एंड नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको एटॉमिक साइज को आयंस को कैसे फाइंड आउट करना है, न्यूट्रल को कैसे फाइंड आउट करना है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का कंपैरिजन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस आयनाइजेशन एंथैल्पी. सेकंड एक्चुअली एंड को second one is ionization enthalpy. Ionic atomic दोनों radius ही, that's why we can calculate the topic is only one first topic. And second one is ionization enthalpy. Ionization enthalpy. First one, enthalpy means what? Enthalpy means energy, right? Enthalpy means energy. This energy is measured, and enthalpy units are kilojoule per mole. किलोजूल पर मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी यूनिट्स है किलोजूल पर. वहाँ पे रेडियस का यूनिट्स क्या होता है, पिकोमीटर. सिमिलरली
enthalpy of is kilojoule per mole. Okay. What is ionization enthalpy? The energy required to remove one electron of gaseous state atom is known as means the energy required to remove one electron from the gaseous state of valence shell element, that is known as ionization. तो इतना जरूरत है गैस स्टेट में जो एलिमेंट है और एटम है उसका वैलेंस शेल में से वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है. Simple energy required to remove one electron from the valence shell of neutral gas state element, that is known as ionization enthalpy. Ionization enthalpy is equal to kilojoule per mole. Here, the minimum energy required for formation of positive ion, electron remove होगा तो automatic positive ion form होगा, from gaseous neutral atom by removing electron is called ionization enthalpy or energy. First ionization enthalpy is the required energy required to remove first electron, first ionization enthalpy, second ionization enthalpy, third ionization enthalpy. First ionization enthalpy means the energy required to remove first electron from the neutral atom of gaseous state is known as first ionization enthalpy. Second over the second ionization enthalpy, third over the third ionization enthalpy. Different energy levels of ionization. First ionization enthalpy, second ionization enthalpy, third ionization enthalpy. Different values रहेगा. Kilojoule per mole different value होगा. That is important. When we remove the electron from the atom, it will get positive side. तो पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है प्लस वन फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी. And next, in other words, first ionization enthalpy of an element M is the difference of enthalpy for the reaction shown by the following equation. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताते हैं. एलिमेंट यहाँ पे हम लोग M एलिमेंट डिफरेंस ये होगा ऑलरेडी ये m element example बता रहा हूँ. This one is m one atom. Consider it as an atom. This atom having its own energy, clear, and we using from outside energy to remove the electron. The energy difference, so total calculation of its own energy and by using outer energy difference लेंगे तो ionization enthalpy calculate कर सकते हैं. Here ionization enthalpy is indicated with H. Enthalpy को H से indicate कर रहे हैं तो this is enthalpy is indicated with H, but here ionization enthalpy that's known as HI. Enthalpy always we can find difference only. Initial value, final value. Actually, initial value means its own energy. Final value means how much energy we use it from outside. That is the difference. Then this ionization enthalpy change will calculate as delta HI. Ionization enthalpy change. Ionization enthalpy change. Ionization enthalpy change is indicated with delta HI. डिफरेंस को फाइंड आउट करना है. कंपलसरी डिफरेंस से ले सकते हैं, डायरेक्ट फाइंड आउट क्योंकि ओरिजिनल एनर्जी रहेगा उसका एनर्जी होगा, बाहर से हम जो यूज करते हैं उसका डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल. तो m है तो फर्स्ट ionization enthalpy होगा तो delta 1 HI delta 2 HI. फर्स्ट ionization enthalpy, second ionization enthalpy, third ionization enthalpy, fourth ionization enthalpy etc. आपको जितना चाहिए ionization delta I H ले सकते हो, H I भी ले सकते हो. H1 ले लो, H2 ले लो, बेटर delta I H ionization enthalpy delta I H1 delta I H2 delta I H3. First ionization enthalpy, second ionization enthalpy, third ionization enthalpy we can indicate with the symbols. Okay, ionization enthalpy difference को delta I H से indicate. Here M is an atom element. When we remove one electron from this M, it forms positive and releases one electron. तो one electron remove किया तो one electron remove करेंगे तो इसका जो ionization enthalpy होता है वो delta I H1 first ionization enthalpy and from M place we can remove another one electron. This is known as second ionization enthalpy. When we remove one electron from M plus 2, then we form M plus 3 one electron, and this is indicated with delta H.
First ionization that means first we will remove one electron from the M atom. So that is first ionization enthalpy. So M plus 2 means second electron. First electron remove किया कुछ energy requirement हुआ. Second में से one electron remove करने के लिए कुछ energy requirement हुआ. That is delta I H2. And another one third electron remove करने के लिए जो energy requirement होता है वो third ionization enthalpy. तो M plus 3 form हुआ delta I H3. The second ionization enthalpy will be higher than the first ionization enthalpy because of increased effective nuclear charge. The force of attraction of outermost electron towards the nucleus increases in effective nuclear charge. Removal of electrons having higher force of attraction towards the nucleus requires more energy. Thus, ionization enthalpy also increases with increased effective nuclear charge. The increase required to remove the third electron is called third ionization enthalpy. Its value is found higher than the second ionization enthalpy. Here is clear. Okay. Clear. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है फर्स्ट ionization enthalpy. सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो सेकंड ionization enthalpy. थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए थर्ड ionization enthalpy. यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ionization enthalpy सेकंड ionization enthalpy ये दोनों को लेके डिस्कशन करें. तो इन दिस टू which ionization enthalpy is maximum and why? इन दोनों में से किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू मैक्सिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होता है कि कंपैरिजन विद सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मैक्सिमम विद फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो वो कैलकुलेट करने के लिए यहां पे डिस्कशन. तो मैं यहां पे बता रहा हूं delta I H2 is greater than delta I H1. Second ionization enthalpy is greater than first ionization enthalpy. Reason. When we here first ionization enthalpy में क्या होता है न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना. Neutral atom से electron remove कर दो, minimum energy will be required. Okay. And positive means electron remove कर रहा है. Already number of protons. Positive means electron loss. Then automatic protons are higher than electrons. X electron X proton समझ लो. 10 electron 10 proton समझ लो. तो 1 electron remove किया तो 9 electron 10 protons है. तो positive का effective nuclear charge increase होगा. तो effective nuclear charge of positive ion will be increased. Then the second ionization enthalpy of the positive ion will be increased. Means यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट ionization enthalpy minimum रहेगा तो यहाँ पे minimum attraction between nucleus and electrons. But second ionization enthalpy is greater than first ionization enthalpy because already it forms positive ion. In this positive ion, effective nuclear charge is higher than its parent atom. Then second energy will require maximum than first energy. तो यहाँ पे इफेक्टिव जितना पॉजिटिव साइन होगा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा. जितना न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा उतना एनर्जी रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे न्यूट्रल है मिनिमम रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव है मिनिमम से ज्यादा है. तो पॉजिटिव के बाद यहाँ पे सेकंड होगा तो और इससे भी ज्यादा इन सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसमें होगा हाईएस्ट पॉजिटिव साइन. जिसमें हाईएस्ट में पॉजिटिव साइन होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम होगा. जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम होता है एनर्जी रिक्वायरमेंट भी मैक्सिमम रहेगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस साइड. तो अट्रैक्शन ऑफ टुवर्ड्स इटसेल्फ न्यूक्लियस मैक्सिमम. तो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस मैक्सिमम अट्रैक्ट करेगा तो हम लोग बाहर से जो यूज करने वाला एनर्जी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से रिमूव करना है तो उससे भी ज्यादा होना चाहिए. पॉजिटिव साइन बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो requirement of energy from outside will be increased. It is clear, right? When positive sign will be increasing, the energy requirement is increasing. Means ionization enthalpy value will be increasing. Here, first ionization enthalpy is less than second ionization enthalpy. Okay. यहाँ पे order तीनों में first and third ionization enthalpy is greater than second ionization enthalpy is greater than first ionization enthalpy. Third ionization enthalpy is greater than second ionization enthalpy is greater than first ionization enthalpy. Means least ionization enthalpy we require neutral atom value. Neutral में equal number of electron, equal number of proton. तो effective nuclear charge ऐसे ही nuclear charge तो increase नहीं होगा decrease नहीं होगा.
But formation of positive. When we remove the electron, then proton number will be increased, then effective nuclear charge will be increased. One remove होगा तो one proton increase होगा, two remove होगा तो two proton increase होगा. जितना electron remove होगा उतना proton increase होता रहेगा. Effective nuclear charge of the atom will be nucleus will be increased. Then attraction between electron and proton will be increased. Effective nuclear charge increases, the size of atom will be decreased. Clear? Means third ionization enthalpy is greater than second ionization enthalpy is greater than first ionization enthalpy. और आपको फोर्थ होगा तो और इससे भी ज्यादा रहेगा, फिफ्थ होगा तो इससे भी ज्यादा रहेगा. नेक्स्ट, relation between atomic number and first ionization enthalpy of elements having atomic number 1 to 60 is shown in figure 3.1. It indicates the value of first ionization enthalpy of noble gases are maximum in this periodic table. Which elements having first ionization enthalpy is maximum? तो ऑब्जर्व करो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नॉट आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो बात नहीं करते. मैं फर्स्ट का बात कर रहा हूँ. फर्स्ट मींस वन इलेक्ट्रॉन, स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट. द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस आर मैक्सिमम. 18th ग्रुप एलिमेंट और 0 ग्रुप एलिमेंट का मैक्सिमम रहेगा. रीजन ये है, ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, NS2 NP6 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैसेस से, तो उसको इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट नहीं है और लॉस होने की जरूरत नहीं है. बट व्हेन वी रिमूव द वन इलेक्ट्रॉन, तो ऑलरेडी स्टेबल है, स्टेबल में से वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होता है. दैट्स व्हाई नोबल गैसेस हैविंग higher first ionization enthalpy values, and first ionization enthalpy value is least in metals, first group elements, क्योंकि 18th ग्रुप में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो अनस्टेबल होगा. ऑलरेडी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर अनस्टेबल. व्हेन वी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, इट विल गेन द नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम में से वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी लेस बिकॉज़ इट इज वेरी एक्टिव मेटल्स, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर एक्टिव एलिमेंट्स हैं. एक्टिव एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर स्टेबल होने के लिए ट्राई करें. So first ionization enthalpy of first group elements are very less, and first ionization enthalpy of 18th group elements are very higher. And next, the trend ionization enthalpy in group and period. Next one, here one thing is that the inner orbital electron of an element fulfill the need to shield or screen valency electron and causes decreased attraction of valency electrons toward the nucleus. It results in decreased ionization enthalpy of valency electron. Here another one word is important, that is screening effect. Screening effect or shielding effect. Screening effect or shielding effect. What is screening effect? Screening effect means in an atom having different shells. Atom having different shells. Here, last shell is known as outermost shell. This one is outermost shell. These two shells are inner shells. Inner shells always try to take electron from towards itself. When this inner shell having electrons and outer shell also having electrons, these two shells occur repulsion because of presence of electrons. तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है. The repulsion occurred between two shells. This repulsion is known as screening effect or shielding effect. Means repulsion occurred between electron, otherwise inner shells and outer shells due to presence of electrons. This effect is known as screening effect or shielding effect. When the shielding effect or screening effect will be increased by the increasing of electrons in the shell. शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा. शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा. द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू शेल्स विल बी इंक्रीज्ड. व्हेन शील्डिंग इफेक्ट विल बी इंक्रीज्ड, द साइज ऑफ एटम विल बी इंक्रीज्ड, द आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज्ड. मींस एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा, क्योंकि ये साइज किस पे डिपेंड होता है? शील्डिंग इफेक्ट पे डिपेंड होता है. शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट विल बी इंक्रीज्ड, ionization enthalpy value will be decreased. Shielding effect, screening effect decreased, ionization enthalpy value increased. Shielding effect decrease होगा तो size decrease होगा, attraction between electrons and nucleus increase होगा, तो requirement of energy maximum. So this is the information about screening effect and shielding effect, ionization enthalpy. And one thing, this ionization enthalpy in group and period. What happens when we move top to bottom? The size of atom will be increasing.
the ionization enthalpy value will be decreased. When we move left to right, the size of atom will be decreasing, then ionization enthalpy will be decreased. Means ionization enthalpy को भी atomic size decide है. Size कम होगा तो ionization enthalpy ज़्यादा होगा. Size ज़्यादा होगा तो ionization enthalpy कम होगा. This is the information about ionization enthalpy. Next we will discuss examples on this ionization enthalpy.